Hello, welcome to all on Aadhaar Academy. So let's continue discussion on the stability of the naval ships. So this is the second case, pitching of the naval ships. So the pitching of the naval ships means it is the movement of the ship. Pitching means it is the movement of complete ship. It is the movement of complete ship up and down, up and down in a vertical plane, in a vertical plane about transverse axis. So when the ship it vertically इस तरह से ship है suppose when it moves vertically upward and downward like this, vertically upward and vertically downward about the transverse axis. So transverse axis कहाँ है? So transverse axis is here. Transverse axis means along the width. Along the width it is moving upward and moving downward, moving upward and moving downward. So this kind of motion we refer as a pitching of the ship. And in this case, this transverse axis, this transverse axis, it will always be your precision axis, because the vertical movement ये शिप है. सो वर्टिकल मूवमेंट कहाँ से दिखेगा? इस एक्सिस से दिखेगा. सो वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउन. दिस ये ब्लैक एक्सिस इट इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस. So we want to find out what will be the gyroscopic couple value of C in this particular case and what will be the direction of the gyroscopic couple. So for that let us assume, for the analyzing this the pitching of the ship vertically upward and downward, let us assume it performs a simple harmonic motion. So we are assuming what we are assuming, that the pitching of the ship it is in a manner of simple harmonic motion. So it is in a manner of simple harmonic motion. That means if vertically upward जा रहा है, vertically upward and again vertically downward. So it is continuously performing simple harmonic motion. So for that let us assume that this is the maximum position through which this ship, or we can say this is the amplitude of the ship, amplitude of the simple harmonic motion, and we represent by the phi. Phi क्या है? It is the amplitude of the simple harmonic motion. That means ये ship मैक्सिमम कितने एंगल टर्न हो सकता है वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड? by angle phi. So phi is the amplitude. So phi, first symbol phi, it is your amplitude of swing. It is your amplitude of swing. मैक्सिमम कितने डिग्री अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर सकता है, और वी कॉल दिस इज अ मैक्सिमम एंगल थ्रू maximum angle turn from mean position से कितने एंगल मैक्सिमम he can turn vertically upward and vertically downward. So this is the amplitude of the harmonic motion. And let at any time t, this is the position of the ship. This particular position from the mean, this is your mean position. From the mean position, this is angle theta, and this is at any time t. This is the position of ship at any time t. And what is the maximum
angle, so that is your phi. So I can represent this displacement of this ship theta in terms of phi. So I can write angular displacement, I can write angular displacement, angular displacement at any time t, any time t. So that is theta. So what will be theta? Theta will be phi, and it is performing simple harmonic motion, so I will represent sine, and let's, this is omega 1 t. Phi, it is the maximum angle of swing at any time t. This is the angular displacement of the ship. And what is omega 1? Omega 1, it is the angular velocity of simple harmonic motion. This is the different from ओमेगा एंड ओमेगा पी. ओमेगा 1 क्या है? ओमेगा 1 ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना है? सो ओमेगा 1, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. एंड सपोज इफ एनी पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, सो वी कैन राइट इट्स एंगुलर वेलोसिटी. तो कैसे लिख सकते हैं? सपोज कोई पार्टिकल है जो एक सर्कल में मूव कर रहा है, दिस इज द पार्टिकल ए, दिस इज द सेंटर, दिस इज द, सो फॉर ए कंप्लीट साइकिल, व्हाट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सो डिस्टेंस कवर्ड, एंगल कवर्ड, इट इज 2 पाई. कंप्लीट साइकिल इस तरह से पूरा जाके अगेन इट्स कम्स टू द पॉइंट ए. So 2 pi is the distance covered, and suppose the time taken to one complete cycle we refer as a time period. So time period is TP, time taken to complete one cycle. So distance is 2 pi and the time is TP. So I can write omega 1, that is the angular velocity. So I can write omega 1, so that will be your angle of total 2 pi, and this will be your TP. What is TP? TP, it is the time period of SHM. सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक साइकिल कंप्लीट करने में इट टेक्स TP टाइम. सो दिस इज द phi, that is the displacement of ship at any time t. So that theta what indicate? Theta क्या इंडिकेट कर रहा है? बेसिकली इट इंडिकेटिंग हाउ दिस स्पिन वेक्टर इज चेंजिंग इट्स पोजीशन. अभी स्पिन वेक्टर कहाँ था? ये इस एक्सिस पे था, अभी ग्रीन लाइन पे, फिर ब्लैक लाइन पे. सो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीजन कैन बी ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग थीटा with respect to time. So I can find angular velocity of precision, that is omega p. So omega p can be written as, differentiate this theta, so this will be your d theta over dt, or I can write this is d over dt. In the place of theta it is phi sine omega 1 t. So let's do differentiation. So for differentiation, so again look, omega p, phi is constant, so it will come outside. Differentiation of sine omega t, so it will be sine, it will be cos omega 1 t. Again we differentiate omega 1 t, so we get omega 1. So that means omega p, it will come out phi omega 1
and cos omega 1 t. This is the value of omega p. So we have value of theta. Theta को हमने differentiate किया. So on differentiation we get the angular velocity of precision. Now again the gyroscopic couple. So gyroscopic couple, that is C, it will be I into omega and omega p. So what is I? Again it will be moment of inertia of rotating parts, angular velocity of rotors, and omega p. In the place of omega p, now we have a phi omega 1 and cos omega 1 t. So this is the expression of gyroscopic couple at any time. This is gyroscopic couple at any time. But generally we try to find out what is the maximum value of gyroscopic couple. So for that, for C maximum, that means maximum value of gyroscopic couple. So for that, the value of C depends on I, omega, and this particular term. I, it is a constant quantity. Omega, again it is a constant quantity. That means it only depends on the value of phi. Again it is constant. Maximum amplitude is constant. So it depends on only the value of cos omega 1 t. So that means for if want to find out C maximum, so for that omega p, that should be your omega p max. Angular velocity of precision set, that should be your maximum. So I can find out this is your omega p. So omega p max कैसे find करेंगे? So for that, cos omega 1 t, this particular term has maximum value. इस term की value maximum होनी चाहिए. And what it will cos theta is maximum value, it can take maximum positive value, that is 1. So omega p will be omega p max when cos omega 1 t, that will be equal to 1. That means omega p max will be phi and omega 1. So this will be your maximum value of angular velocity of precision. So I can find out the maximum gyroscopic couple, that is the C max. C max will be I into omega, and omega p, that will be phi into omega 1. So that I can substitute the value of omega 1 in terms of given quantity. So omega 1 हमने क्या लिखा था? Omega 1 we have already written 2 pi over Tp. So I can write C max, it is I into omega into phi, and this will be your 2 pi over Tp. Or I can write this is the I into omega into 2 pi phi divided by Tp. So this is the expression. For maximum gyroscopic couple. This is the expression for maximum gyroscopic couple. It is the expression for C max. So question will be asked on find out the maximum value of gyroscopic couple. So you have to remember this expression for C max. It is the I omega, and this is what is this particular term. This is your 2 pi phi over Tp, or you can remember in terms of phi max. Phi max भी omega p max क्या है? Omega p max, this is your 2 pi phi over
TP. So I can write this is your I into omega P max. Any way, किसी भी तरह से you can remember the value of maximum gyroscopic couple. So this is the expression for gyroscopic couple in the case of pitching. Let us look the direction. What will be its direction? So again, we are assuming that this here is the rotor. This is the rotor of the ship, and suppose someone looking from this side. So this is the direction of viewing. And suppose this rotor is rotating in clockwise. It's rotating in clockwise direction. So let us, for this particular situation, draw the spin vector. So this point is O. This point is O, and this rotor is rotating in clockwise. ये इस तरह से rotate हो रहा है clockwise. So your spin vector will be along positive x-axis. So this is your x, and this will be your spin axis. And suppose we are considering the case when the pitching is upward, that means ship is moving towards upwards. जब आपका ship है, this particular ship, it is moving in the upward direction, ये इस तरह से upward direction में जा रहा है. So in that case we want to find out the direction. So ये रहा spin vector ये रहा. Precision, that will be always along the transverse axis, that means precision that will be always on y axis. Precision your will be always on y axis. So this will be your axis of precision. For gyroscopic couple, this is the direction of spin vector. So ship is moving vertically upward, so rotate this vector vertically upward. That means on positive y-axis. So in this axis we have an active gyroscopic couple, and to get the reactive gyroscopic couple, reverse the direction. That means it will go on negative y-axis. So it will go like this. Let this is z-axis. So this will be your y dash. This will be your axis of precision. This is your axis of precision. एक्सेस को थोड़ा सा केयरफुली लेना है. कौन सा? बिकॉज हम वर्टिकली को y से शो कर रहे हैं. सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर एक्सेस वी प्लॉट एज ए z. सो प्रिसीजन एक्सेस कैसा होगा? वर्टिकली अपवर्ड. तो वर्टिकली अपवर्ड तो प्रिसीजन कैसा हुआ? इस तरह से हुआ. सो इस तरह से हुआ. सो सेंस विल बी पॉजिटिव z. सो इस पॉजिटिव z साइड में हमारा स्पिन वेक्टर आएगा. एक्स पे प्रिसीजन वेक्टर आएगा. सो एक्स पे स्पिन आ गया, z पे प्रिसीजन, और माइनस y पे दैट वी हैव अ रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल. सो लेट अस सी द इफेक्ट. ये सिप रहा, स्पिन वेक्टर पहले ऐसे आया, फिर ऐसे रोटेट किया, पॉजिटिव आई, रिवर्स बनाया, दिस इज द नेगेटिव आई. सो सेंस विल बी, सेंस किधर से आया? वर्टिकली डाउनवर्ड है. तो सेंस कैसे हुआ? ये इस तरह से हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड. सो इट विल, ऊपर से देखोगे सो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ऊपर से कैसा लगा? क्लॉकवाइज. दैट मीन्स क्लॉकवाइज का मतलब है ये रहा, क्लॉकवाइज ऐसे लगा, तो क्लॉकवाइज का मतलब शिप किधर टर्न हो जाएगा? सो इट विल मूव टुवर्ड द स्टारबोर्ड साइड. सो इफेक्ट विल बी शिप will move towards starboard side. वो स्टारबोर्ड साइड की साइड में मुड़ जाएगा. एक बार फिर से देख लो कैसे है. ये मेरा शिप रहा,
इधर से कोई देख रहा है तो ये मेरा स्पिन वेक्टर रहा पॉजिटिव एक्स। अगर मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड 90 डिग्री घुमाऊंगा तो किधर आएगा, वर्टिकली पॉजिटिव एक्सिस पे आ जाएगा। उसका रिवर्स बनाऊंगा तो किधर चला जाएगा, निगेटिव। तो ये इस तरह से रहा, अभी ये इस तरह से रहा। सो सेंस कैसा रहा ऊपर से देखने पे, इट विल बी क्लॉक वाइज। सो क्लॉक वाइज दैट मीन्स द शिप विल टर्न टूवर्ड्स द starboard side. So let us take the case when pitching is when the pitching is downside, when the pitching is downside. So again your spin axis will remain same, so this will be your spin axis, it is on x axis, precision will be on z axis. So शिप वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, दैट मीन्स प्रिसीजन विल बी ऑन नेगेटिव z. सो दिस विल बी योर एक्सिस ऑफ प्रिसीजन z dash, this will be your spin axis, and this is your precision axis. That means gyroscopic couple will be on y axis. So positive y and negative y, that will take, ये मेरा रहा स्पिन वेक्टर, इसको नीचे की साइड में रोटेट किया 90 डिग्री, इसका अपोजिट बनाया, दैट मीन्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन. सो दिस विल बी योर पॉजिटिव वाई, सो दिस विल बी वाई, एंड द सेंस विल बी योर, ऊपर से देखेंगे सो इट विल बी एंटी क्लॉक वाइज. ये इस तरह से एक बार यहाँ से देखो, ऐसे रहा, शिप रहा, ये वर्टिकली नीचे जा रहा है स्पिन वेक्टर, वर्टिकली नीचे रोटेट किया तो नीचे की साइड गया, अपोजिट बनाया तो वर्टिकली पॉजिटिव. सो शिप विल मूव, सो इफेक्ट विल बी मूव टूवर्ड्स, पिचिंग में इट विल मूव टूवर्ड्स द पोर्ट साइड, so this is the case 2. You can make number of cases by changing whether this is rotating anti-clockwise or clockwise. Always keep in mind, draw the spin vector first, rotate the spin vector by 90 degree in the direction of precision for active gyroscopic couple, and for reactive gyroscopic couple reverse the direction of the active gyroscopic couple. So in that way we find the value of C, that is gyroscopic couple, in the case of pitching. We can do few more calculation in this. Suppose someone asks find the maximum angular velocity of pitching, angular acceleration. Suppose someone want to find out what is the angular acceleration during pitching. So for angular acceleration कैसे आएगा, differentiate the angular velocity with respect to time. So angular velocity we have already find. Angular velocity, what is the expression for angular velocity? So omega already we have find. Angular velocity that we have already find. So angular acceleration, its symbol is alpha, and if you have a theta, so differentiate 2 times theta, so you can write d2 theta over dt square or d over dt into omega p. Omega p को भी differentiate करके you can find out. So omega p, so this do calculation d over dt, and it is phi omega 1 cos omega 1 t. So here phi omega 1, this is all are constant, so phi omega 1 coming outside, we will differentiate cos, so differentiation of cos will be minus sine omega 1 t, and omega 1 t again we will differentiate with respect to time, so we get omega 1. So simplify this, it is phi minus omega 1 square sine omega 1 t. So this is your alpha, angular acceleration at any time, the angular acceleration at any time.
And suppose we are interested in to find out alpha max, maximum angular acceleration. So for maximum angular acceleration, this sign term that should have a maximum value. Maximum value, that means the sine omega 1 t, it has a maximum value and that is 1. So alpha max, it can be minus phi omega 1 square. So this is the maximum value of angular acceleration, phi. This negative sign what is indicating? It is indicating that this angular acceleration, that is alpha, it is proportional to phi but in negative manner. That means angular acceleration alpha, it is proportional to, sorry, here we can write this is the angular acceleration, it is proportional to minus displacement, and this is the basic condition of simple harmonic motion. So यहाँ से ये prove भी हो रहा है, that means the ship is performing simple harmonic motion. Simple harmonic motion के condition क्या है? Angular acceleration, this is the symbol of proportionality, not alpha. So angular acceleration, that is alpha, it is proportional to the displacement, but negative sign indicating that is the alpha, sorry, acceleration and displacement both are in negative opposite direction. Alpha, इसका मतलब क्या हुआ? Alpha and theta, they are in opposite direction. They are in opposite direction. That means अगर सिप ऊपर की साइड जा रहा है, that means theta taking positive value, तो acceleration will act negative there, नीचे की साइड में एक्ट करेगा. अगर सिप नीचे की साइड जा रहा है तो acceleration जो होगा opposite साइड में एक्ट करेगा. So that is the meaning, that is the indication. Here we have an interpretation of this minus sign. माइनस साइन का मतलब, नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू नेगेटिव है. नेगेटिव का मतलब है एंगुलर एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट pitching of the naval ships. Let us take quickly what will be in the third case, that is the naval ship during rolling. So again, for the rolling we have to draw its front view. So front view something like this. This will be your front view of the ship. This is the longitudinal axis. And here this is your direction of view. Here we are looking. Here we have a rotor. So rolling means this. Again, this is the ship. रोलिंग का मतलब यहाँ से कोई देख रहा है और सिप इस तरह से रोल हो रहा है, ये इस तरह से रोल हो रहा है, कभी इस तरह जा रहा है, कभी इस तरह जा रहा है, इस तरह जा रहा है. दैट मीन्स प्रिसीजन कहाँ पे होगा? प्रिसीजन अगर कोई ऐसे देखेगा तो प्रिसीजन इधर होगा, अगर कोई ऐसे देखेगा तो प्रिसीजन अगेन इट विल बी ऑन एक्स एक्सिस. सो प्रिसीजन विल बी along x axis. In this axis we have a precision. रोलिंग कहाँ से दिखेगा? तो रोलिंग यहाँ से दिखेगा, इस साइड से दिखेगा, और सिप या तो क्लॉकवाइज में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है. इन बोथ द डायरेक्शन स्पिन प्रिसीजन कहाँ पे होगा? अलोंग द एक्स एक्सिस. इधर से देखा तो ऐसे पॉजिटिव साइड में गया, इधर से देखा सो निगेटिव. प्रिसीजन इज अलोंग एक्स एक्सिस. एंड सपोज दिस रोटर इज रोटेटिंग अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एज वी आर पहले से इसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि दिस रोटर इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. सो अगर रोटर भी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, सो स्पिन वेक्टर किधर होगा? स्पिन वेक्टर आल्सो विल बी ऑन द सेम एक्सिस along the x axis, so this is your spin vector. So both the vectors, precision axis and spin axis,
both are parallel in the case of rolling. So both means precision axis and spin axis are parallel. तो अभी कैसे घुमाओगे? both are parallel, that means दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, आप ये स्पिन वेक्टर रहा, इसको 90 डिग्री घुमाए, इसी डायरेक्शन में आ गया, दैट मीन्स इट डज नॉट अफेक्ट, दैट मीन्स रोलिंग की वजह से गायरोस्कोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता. व्हाई? बिकॉज दीज टू एक्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर. इससे पहले वाले केसेस में जितने भी स्टडी किए हैं, स्पिन एंड प्रिसीजन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो तीनों एक्सेस है, gyroscopic couple, axis, spin vector and precision, all three are perpendicular, but in this particular case these two axes are always parallel. चाहे ये clockwise घूमे कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे या सिर्फ क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए, it will be always parallel to each other. So in that way we can say it does not affect. So gyroscopic, or we can say no effect of gyroscopic couple. कब? in rolling of ship. So रोलिंग के केस में गायरोस्कोपिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता. स्टीयरिंग एंड पिचिंग हैव अ गायरोस्कोपिक कपल. स्टीयरिंग के केस में सी कैसे फाइंड करेंगे? स्टीयरिंग के केस में सी विल बी आई इंटू ओमेगा पी. दिस इज योर स्टीयरिंग. ओमेगा पी वी बाई आर से और एनी वे से फाइंड कर सकते हो. दूसरे केस में हमने सी कैसे फाइंड किया था इन द केस ऑफ पिचिंग? सो सी दैट इज योर आई इंटू ओमेगा पी मैक्सिमम इन द केस ऑफ, if we are interested, suppose, sorry, so in the case of rolling we do not have any effect, and this is the formula for gyroscopic couple in steering, and this is for calculating the gyroscopic couple in naval ship during pitching. So remember formulas. Remember कि straight forward they ask the questions sometime directly in steering के case में and sometime in the pitching. So remember formula, and for direction always remember one step. क्या याद रखना है? First you draw the spin vector or spin axis. Rotate this spin axis by 90 degree in the direction of precision. So we get active gyroscopic couple. And for reverse the direction, again reverse direction, and we get reactive gyroscopic couple. So आपको केवल डायरेक्शन का केयर करना है. फॉर्मूले तो दो ही है. डायरेक्शन अगर if you are able to calculate, so will never made a mistake. Otherwise जहाँ पे प्लस आना चाहिए you have a minus sign and it will not get the correct answer. So please remember this to find out the direction of the gyroscopic couple. So we have completely discussed stability of the naval ships. Thank you.